ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, मेरे लिए उस इंडस्ट्री में स्कोप है या नहीं है, और अगर स्कोप है, राइट, what kind of scope can I see, what sort of money I can make being into M&A or being into working into an M&A team, right? तो मैं थोड़ा सा आपको एक डिटेल देना चाहूंगा. इन ऑलमोस्ट 2022-2023 we saw 1200 plus M&A transactions. 1200 से ज्यादा मर्जर्स या एक्विजिशन या डीमर्जर्स या इन्वेस्टमेंट्स हुए. इन्वेस्टमेंट्स को हटा भी दूं, मर्जर्स और एक्विजिशन मिला के 1200 प्लस डील्स हुई है. Value of all these deals, it comes up to 162 billion. Now just imagine the number that you see here. So when it comes to M&A, of course, your work is really difficult at sometimes when you don't have experience, but it's a very rewarding career. The sort of money that you can make being an M&A lawyer, the scope is immense, right? And not just that, अगर हम 2021 से compare करें the whole scenario, it's growing with the CAGR, year-on-year growth of 36%. which means कि आज अगर 2022 में 1200 डील्स हुई है, there's a great probability कि उसके अगले कुछ सालों में अराउंड एंड अराउंड 1600 से 1700 डील्स होंगी. हम इस सेक्शन को थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे आगे जाके ऑन how you do really make a career in these particular deals, right, with the growing scenario. But it's very important to understand कि if you want to be an M&A lawyer, if you want to be the top 1% of the law graduates, right, that's the industry that you're getting into. Specifically अगर बात करें इंडिया में are top firms like AZB, you know, SAM, CAM, even Indus Law to some extent. इन्होंने मिला के 20 से 25 बिलियन की डील्स को एडवाइस, कंसल्ट, डीडी which we call due diligence, right, इन एक्टिविटीज में पार्ट लिया था. एंड अराउंड 40% ग्रोथ दिखी हमें in just the last 2 to 3 years when it comes to consultancy fees, consultancy money, or let's say due diligence, or the total advisories. Acha, why is this happening? I just quickly want to know from each and every one of you, why do you really feel कि ये इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है? Why are so many M&A transactions happening? Anyone can open their mics as well. I don't mind that. Cool. Nobody over there in our offline setup, someone wants to answer this? Chali, I'll get you through it. Won't be an issue. So yeah, with the increasing number of startups right now, रोज नए startups open हो रहे हैं, right? And almost all of them are looking to grow themselves in terms of investments, in terms of, let's say, merging with a big brand, or let's say getting acquired or acquiring new companies altogether, just to make sure that they maximize the market area, they maximize into the market area, they gain more profits, and at the end of the day, they make a better pie of revenue when it comes to the overall market share that they belong to, right? When I talk about the employment structure and salary as well, as I told you, it's a pretty rewarding career. If you get into a law firm, in a top tier law firm, I say, you start generally from 10 to 12 lakh rupees. Again, depends on your expertise as well, your experiences, and at the end of the day, which kind of law firm are you getting into. But yeah, the top law firms generally offer you more than 10 lakh plus, being an associate or being a senior associate as well. And why do we prefer law firms, or why do many M&A lawyers prefer a law firm? Because the growth trajectory is immense. What we mean to say here is that you can almost become a partner in like 10 to 12 years, right? And starting in a law firm as a junior or as an associate, and the partners go on to earn around 80 lakh rupees to 1 crore rupees, right? So अगर हम किसी भी company, किसी भी corporate structure की बात करें, this is one of very lucrative and very growing career opportunities. आप generally अगर कोई job करते हो, so you get 10-15% का increment each and every time. But imagine you start today and in 10 years, 12 years, you go on to become a partner.
in a law firm, and your salaries can actually go to 80 lakh rupees or 1 crore per annum, right? So yeah, this is the job opportunities that you have, and immense career gratitude that you'll feel. Again, talking about how the future looks like for mergers and acquisitions, all the transactions. Again, as we talked about, it's growing continuously after 23, 24 with an annual compound rate of 8 to 10%, which means by 2028, you'll certainly have almost 300 billion worth of transactions, 300 billion worth of acquisition, mergers, demergers, venture capitalists coming into picture and investing money. So you can imagine even 1% if it goes to the law firms, right? Imagine the sort of money that you can also make apart from the salaries that you get. Now let's quickly come on to, and this is a very important part when it comes to what sort of skills should an M&A lawyer have. So we talk to a lot of M&A lawyers day in day out. I myself has been into few transactions here and there, right? Overseeing the work of a law firm, and I can tell you this, that the most important skills are mentioned here. You can just have a read, and I'll quickly tell you this. Among the same, having a very good communication, the ability to make sure that your client understands all the legalities is something. When you have a good communication, and of course a very good command on your language, right? Again, with that, if you see all these things, a very minute skill set which many lawyers miss upon is I for detail. अब आई फॉर डिटेल जनरली यार दोस्तों होता क्या है, बहुत सिंपल है, राइट? व्हेन यू गो थ्रू अ डॉक्यूमेंट, व्हेन यू गो थ्रू एनीथिंग इन योर लाइफ, राइट, हाउ प्रिसाइज यू आर, आप कितनी जल्दी चीजों को ग्रैब कर पा रहे हो, कितनी जल्दी आप चीजों को देख पा रहे हो, राइट? एंड आई मीन्स नॉट द आई हियर, आई फॉर डिटेल जनरली मीन्स अगर आप एक डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर रहे हो, इफ यू आर लिसनिंग टू अ सिनेरियो, how exact and how precise you can be, and experience इससे ही आता है. And along with experience, of course, you should have the interest in the field. अगर आप किसी ऐसी फील्ड में काम कर रहे हो जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा, इट्स नॉट योर peak interest levels, right? So obviously the topic that we are not very interested into, right? We generally don't get into the nitty gritties of the same, correct? And but when it comes to things of our choice, things of our interest, obviously we go on and get into every bit of detail we want to, right? So yeah, these are some of the essential skills. And एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा यहाँ पे, वेरी वेरी लिटिल एग्जांपल, बट या आप काफी सारे दोस्त होंगे यहाँ पे, राइट? पीपल यू मे नो, एंड आपने देखा होगा देयर आर सम पीपल हु ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई, क्यों, राइट? मान लीजिए कोई रिमोट नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, ये कार इस तरह से बनी है, क्यों ऐसे बनी है? नॉट मेनी पीपल डू दैट. देयर आर सम पीपल जिनके दिमाग में इट्स ऑलवेज रनिंग, अगर ये टीवी इतनी बड़ी है, क्यों है इतनी बड़ी, राइट? अगर महिंद्रा ने एक नई कार निकाली, क्यों निकाली? दे गो ऑन, दे सर्च. एंड दीज आर द सॉर्ट ऑफ पीपल who are very good when it comes to becoming an M&A lawyer. Why? Because that tendency to ask questions, that tendency to go on and find out why is something happening, why isn't something that's not known to me, that covers all these skills majorly, right? So going forward, again, as I talked about the growth trajectory in a law firm, so if you go on and if you work with a law firm, right, being an M&A lawyer, you start with generally becoming either an executive or a junior associate, right? And then again the ladder grows up, you become an associate, then a senior associate, principal associate, principal partners, associate partners, and then obviously partners, right? I hope every one of you knows this very well. Yes. But when it comes to M&A, the one thing I want to tell you is that the figures that you see here, that's not the exact number that you go for, because it also depends on the transaction. So yes, you would be getting 8 to 10 lakh rupees in a year by having very cost fixed salaries. But if you go on to go big, if the deal cracks and if the deal valuation comes into picture, obviously you'll end up earning more than what's written on the screen right now,
right? So that's why I say it's a very rewarding career. And where can you get into? The most important part. So if you want to become an M&A lawyer, and we'll also cover the steps today on how actually an M&A transaction goes by, right? You can actually get into top law firms, right? AZB, Lelo, Trilegal, Khaitan, Indus Law, right? And there are many law firms, Sam, Cam, correct? Jahan pe you can start your career, and a very rewarding career. Again, there's one more thing, because there's a lot of PNVC, right? Private equity investment, venture capitalist investment into picture, right? You have a very good scope to get into investment banking. You get to be a part of their mergers and acquisition team. You get to be a part of their in-house teams as well, right? And actually help them out in structuring and legalizing the whole deals. And again, you can work in as a in-house counsel. Now this generally takes place in startups as well, right? Badi companies में आप in-house team के member हो सकते हो. But the one thing I want to tell you is that when it comes to in-house roles, right, it's generally a mix of many things. So you just don't won't be doing M&A. आप ऐसा नहीं कि सिर्फ M&A कर रहे होंगे वहां पे. एक in-house counsel जो होता है, they take up many things, right? आप शायद उनके आईपी पोर्टफोलियो भी मैनेज कर रहे होंगे. आप साथ ही साथ में investment opportunity contracts, you may also be looking at employment contracts. So अगर if you want to go in and have a mixed role, आपको लगता है कि नहीं, there may not be some expertise which are underlying in me right now, आप in-house counsel roles की तरफ भी देख सकते हो. ठीक है. एंड अगेन स्टार्टअप्स एज आई टोल्ड, आप इन हाउस टीम्स में काम कर सकते हो, एंड साथ ही साथ में आप अपने खुद के वेंचर्स भी ओपन कर सकते हो, राइट? When it generally comes to having transactions done, obviously people prefer top law firms. So yeah, when it comes to M&A, you can also start your advisories as well. ठीक है. आप consultancy दे सकते हो, आप advisory दे सकते हो, and you can be part, or you can be a partner at a law firm. Partner doesn't mean mean as an aid, as a freelancing aid to these people to help them with due diligence, right? So yeah, now before we start, we have, so we'll go by how an M&A deal is typically done, the steps and processes. That's the major part. Any of us, do we have any sort of doubts, any sort of questions there that you want to ask? The chat section is actually open for all of you. Okay, do we have anything in the chat section? Fair. We do not have anything, and we'll proceed. So if you have anything, you can as well. Now we'll quickly see कि एक M&A deal होती कैसे. देखिए, ये बहुत एक important topic है to understand कि आपका रोल एज एन M&A लॉयर क्या होगा एक पूरी डील की स्ट्रक्चर में. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, does this interest you? Do you feel the tickle in your stomach कि हाँ यार, ये मुझे करना है मेरे करियर में, this is where I want to get in, and that's how you decide. Because now we'll discuss in detail a little about how actually an M&A deal takes place. तो यार, M&A deal को आप इस तरह से समझो. अगर मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊं, मान के चलो आप एक कार लेने जा रहे हो, राइट, या आप एक घर खरीदने जा रहे हो. वेरी सिंपल एग्जांपल. जब भी आप एक घर खरीदने जाते हो, आप एक कार खरीदने जाते हो, एनी इसमें आपका बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी जा रहा है. सो हाउ डू यू प्लान फॉर इट? आप सिंपली जाके घर नहीं खरीद लेते, आप सिंपली जाके गाड़ी नहीं खरीद लेते हो. द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू लुक एट व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट, राइट? सो सिमिलरली, जब हम एक एक्विजिशन की बात करता हूं मैं, या एक इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, द फर्स्ट प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन इज द स्ट्रैटेजिक रैशनल. स्ट्रैटेजिक रैशनल दोस्तों, अगर सरल भाषा में समझाऊं आपको, सो पहली बात, मैं एक कंपनी को एक्वायर क्यों करना चाहता हूं? अगर मैं एक B2B ब्रांड हूं, मैं B2C ब्रांड को खरीदना चाहता हूं, क्यों? क्या मुझे अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है? फाइन, आई विल डू दैट. मेरा रीजन क्या है? व्हाट्स द स्ट्रैटेजिक पर्पस ऑफ मी to put in an investment or to acquire someone, right? That is decided in the primary stages of the deal. And again, target identification. Target identification दोस्तों, it's very simple. So example लेते हैं कोटक का. जब कोटक ने सोनाटा फाइनेंस को एक्वायर किया था, right, they looked at other NBFCs as well, correct? उन्होंने कम से कम 3 से 4 अलग NBFCs को देखा होगा, सेट किया होगा, डिसाइड किया होगा कि ओके, दिस इज द एनबीएफसी दैट वी वांट टू इन्वेस्ट इन. व्हाई?
morals मिलते हैं, the balance sheet looks great, and they believe that उस ऑपरेशनल स्ट्रक्चर में वो वहां से प्रॉफिट्स भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ उसको ऑपरेशनली भी अच्छे से संभाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जैसे हम कार की बात करते हैं, राइट, व्हेन यू वांट टू परचेज अ कार, वी ऑफन लुक एट कि यार ये कार मेरे शहर में चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, राइट, मेरा बजट के साथ साथ में ये मुझे फीचर्स दे रही है नहीं दे रही है। सो अ वेरी सिमिलर स्टेप, राइट। यहाँ पे जनरली लॉयर्स का इतना बड़ा रोल नहीं होता है, राइट, इट कम्स फ्रॉम स्टेप 3। बट स्टेप 2 क्या है, देखिए स्टेप 2 में इज व्हेन यू आइडेंटिफाई कि अच्छा दिस आर द प्लेयर्स आई वांट टू गो इन। सिमिलरली जैसे हम कार की बात करते हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि अच्छा यूट्यूब पे बैठे बैठे कि मुझे Hyundai की एक कार खरीदनी है या मुझे Volkswagen की एक कार खरीदनी है, राइट। सो व्हाट यू डू इज यू अप्रोच देम, राइट, यू गो टू द शोरूम। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, वी जनरली टॉक टू द फाउंडर्स, टॉक टू द CXOs, टॉक टू द इन्वेस्टर्स। तो अगर जलज की एक कंपनी है एंड जलज की कंपनी को एक दूसरी कंपनी एक्वायर करनी है, let's say मुझे हरमन की कंपनी एक्वायर करनी है, तो I'll talk to Herman, I'll talk to people who have invested in Herman's company to find out and to approach them कि चलो यार I want to start this transaction, how do you go about it? Once that is done, then we sign an agreement or an NDA that we call about। ये क्यों जरूरी है यार, इसका बहुत सिंपल सा रीजन है यार, ताकि एक्स्ट्रा बिडिंग ना स्टार्ट हो जाए। एंड अगर आप जिस कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हो या अगर आप खुद एक ऐसी कंपनी जो मार्केट में लिस्टेड है, देन देयर आर सेबी रेगुलेशंस इनटू प्लेस, राइट, आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है। एंड सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू साइन कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट एंड यू मेक श्योर दैट द न्यूज डजंट गो आउट अंटिल यू वांट इट टू, right? When it comes down to this, when certain negotiations starts, of course these are not legal negotiations, these are just terms negotiation, then both the companies go on and sign a term sheet। ठीक है, अब टर्म शीट बेसिकली क्या है दोस्तों, टर्म शीट एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है आपका, जिसमें लेट्स से मुझे कंपनी खरीदनी है, सो आई मेक श्योर दैट आई गेट ऑल पॉइंट्स जॉटेड डाउन कि मुझे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। So I can clearly mention कि okay, I want to invest in your company for let's say 3 years or 4 years and 5 years. This is the percentage of your company. This is the percentage of your equity that I would want to acquire. And these are the certain expectations or these are the certain goals। Let's say मुझे 3x रिटर्न के साथ आना है, मैंने 100 करोड़ डाले, मैं 300 करोड़ की एग्जिट लेना चाहता हूँ आज से 5 साल बाद में, राइट। ये सारी चीजें हम टर्म शीट में मेंशन कर देते हैं, राइट। एंड देन देयर कम्स a letter of intent as well। So both are basically same। And to give you a little context, these documents are not legally binded in most of the cases। कुछ केसेस में अगेन it happens, कुछ केसेस में जनरली डजंट हैपन, ये एक लीगली बाइंडेड डॉक्यूमेंट नहीं होता है। इसका एक बहुत सिंपल रीजन है, बिकॉज parties have just talked it out। So it's more like a gentleman's handshake, where you generally go on and speak to the parties and get it written down on a document। But since I have not they do not have any obligations, so that's why most of the cases में legally binded document नहीं होता है, right? And now comes the important part, where an M&A lawyer comes into picture, is basically step 3, which is DD and valuation। So valuation is generally done by finance partners or financial consultants of any of the companies, right? Usme you don't have to get deep dived into, but due diligence is the actual work that starts and kick off a lawyer's work in an M&A transaction। And hear me out very carefully, जब भी हम DD करते हैं, DD is one of those processes where most of the law firms earn their revenue, most of the partners earn their revenue, and bigger the deal size, better the scenarios, the more you earn out of it। So कोई भी लॉ फर्म के काफी अच्छा चंक, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द M&A सेक्शन, आता है फ्रॉम द ड्यू डिलिजेंस वाला एस्पेक्ट। अच्छा, व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस यार, काफी सिंपल है दोस्तों, मैं ड्यू डिलिजेंस आपको आगे समझाऊंगा। बेसिकली एक हेल्थ चेक लगाना ऑन all the legal obligations on every scenario from end to end, that the company who's acquiring and the company who's getting acquired, right, the terms match in between। There should be nothing which I should feel or which obligates me to not go and acquire that company out। That is due diligence।
आप लोगों ने काफी हद तक पढ़ा भी होगा, बट स्टिल विल कवर इट इन द नेक्स्ट सिनेरियोज. And then, of course, when we talk about the next step, which is how the deal is actually structured. So अभी आपने क्या किया, आपने प्राइमरीली कंसिडरेशंस कर ली, आपने बात करके देख ली. सिमिलर अगर मैं कार का ही एग्जांपल लेता हूँ, तो आपने यूट्यूब पे देख लिया, आप शोरूम विजिट करके आ गए, आपने लेट्स से उनको एक कमिटमेंट दे दी कि हाँ जी मैं मंथ एंड पे कार खरीदने वाला हूँ. अब बारी आती है एक्चुअल ट्रांजैक्शन की, एक्चुअल स्ट्रक्चर की. मुझे एक्चुअल में डिलीवरी डेट कब चाहिए, हाउ वुड आई पे, क्या मैं लोन करवाऊंगा, क्या मैं कैश दूंगा, वुड आई गिव यू चेक. सो सिमिलरली देखिए, हर मर्जर या हर एक्विजिशन बेसिकली कैश एक्विजिशन नहीं होता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नॉट एवरी एक्विजिशन टर्न्स आउट टू बी अ कैश एक्विजिशन, राइट? There are several methods of how do you do it. So a very prominent method right now is a stock subscription or a stock purchase. Basic difference क्या है दोस्तों दोनों में? बहुत सिंपल है. A stock subscription is where the company issues new set of stocks, right? The company issues more number of shares जो कि एक पार्टनर आके खरीद सके. सो एग्जांपल मान लो मेरी कंपनी है एंड आई हैव 4 फाउंडर्स, राइट? हम चारों के बीच में लेट्स से 25-25% बटा हुआ है. सो नाउ अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है मुझ में, व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट मोर 25, मोर 10%, राइट? So I'll open the pie actually a little bit more and I'll give it to that person, right? तो मेरी 100 करोड़ की वैल्यूएशन में I'll add up something, I'll add up more shares and I'll give it to that person, which is stock subscription. When we talk about stock purchase, again a very simple concept but need to understand it very carefully. अगर हम 4 फाउंडर्स हैं, सबके पास 25% ईच है, एक assumption ले रहा हूं मैं. Someone who wants to invest in a company, वो हम चारों में से किसी एक के स्टॉक्स खरीद सकते हैं. सो वो क्या बोलेगा, अच्छा जलज आप मुझे अपने 25% स्टॉक्स दे दो, उससे 25% जो ओनरशिप है वो मुझसे ट्रांसफर होकर उनके पास में चली जाएगी. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्टॉक सब्सक्रिप्शन एंड अ स्टॉक परचेस, ऑफ कोर्स. एंड अगेन एसेट परचेसेस, तो मान के चलिए मुझे गोदरेज कंपनी में इन्वेस्ट करना है, बट मुझे गोदरेज के सारे प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए. आई वांट ओनली a few things. मुझे उसके सिर्फ लॉक्स वाले एरिया में इंटरेस्ट है, राइट? सो व्हाट डू आई डू, आई गो ऑन एंड आई टेल देम कि बॉस आपकी फैक्ट्रीज मुझे चाहिए, तो आप अपनी फैक्ट्रीज दे दो मुझे. आई वांट टू परचेस ओनली, राइट? आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन द होल बिजनेस ऑल टुगेदर. सो दैट्स बेसिकली, लीजिए अगर टाटा वांट्स टू इन्वेस्ट इन जनरल, they do not want to invest in the whole business, they just want certain assets. That doesn't mean tangible assets, it can be trademarks as well, it can be IPs as well, correct? तो वहां पे वो पर्टिकुलरली उन्हीं चीजों को परचेस करने में अपना इंटेंट दिखाएगी. Then again there is merger when two companies come together, which we talked about. And of course stock swap. Stock swap क्या होता है यार, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. मान के चलिए दो कंपनीज, आई एम अ स्टार्टअप एंड टाटा वांट्स टू इन्वेस्ट इन मी, राइट? सो नाउ टाटा डजंट वांट टू पुट इन मनी. सो टाटा ने क्या बोला, यार मैं आपके 100 करोड़, that means I want 50 crores रुपए. I won't pay you 50 CR in cash, but what I'll do, मैं आपको 50 करोड़ के टाटा की इक्विटी दे दूंगा, राइट? सो मान लीजिए इफ इट्स 0.001%, आप वो ले लीजिए और उसके बदले में मुझे आपकी 50 करोड़ की वो दे दीजिए. जैसे दोनों बिजनेसेस ग्रो होंगे, द मनी वुड ग्रो इवेंचुअली, एंड दैट्स व्हाट इज स्टॉक स्वैप. एंड अगेन देयर आर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशंस एज वेल. एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा. मान लीजिए मैं एक स्टार्टअप हूँ, अभी काफी फेमस भी हो रहा है, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, बट स्टार्टअप ओनर्स के पास में जनरली मार्केटिंग बजट नहीं होता है, राइट? बट दे वांट टू साइन बिग stars like Salman Khan, Virat Kohli, right? So the prominent way of hiring them or getting them on board is paying them certain money. मान लो कोई 10 करोड़ 15 करोड़ मांग रहा है आपसे, और what you can do actually कि सर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा and I'll also give you let's say 3% of the equity of my company, which is far more equivalent to let's say 7-8 crores के आसपास में right now, or would grow in 7-8 crores in a year or two. Which means if you believe in my idea, आप 1 करोड़ कैश ले लो, थोड़ी सी इक्विटी ले लो एंड मेरे लिए काम कर लो. So again that's a very prominent way which is right now being in place when it comes to non-monetary considerations as well, right? Again M&A की बाकी की स्टेप्स क्या है, सिंपल, जहां पे अब भी आपका काम आएगा, which is the negotiations, right? Being an M&A lawyer, it's very important for you to bring in good for your client
to have the negotiations, to have the agreements in place so that your client is benefited more than the other party. That's the only job you play, right? So negotiations where there are different aspects, employment contracts किस तरह से बनेंगे, right? How would the structure look like? क्या timeline रखनी है? Should it be a cash burnout as well? या cash payout होना चाहिए, कितना होना चाहिए? These are certain, and there is a lot of negotiation that happens, and these are generally practices which take 4 to 5 months as well, right? Starting from due diligence to coming to negotiations, it may take 4 to 5 months in a typical acquisition or an investment as well. And then, of course, when you complete everything, when the deal is structurized, then you go on to make some agreements. Again, the agreements should be made in a way that it benefits your client as well, but at the same time, it does not just protect the situation right now, but in the coming part as well. देखो, being an MLA lawyer, आपका सबसे simple task ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा मैटर्स सॉल्व हो जाए, वो लिटिगेशन में ना जाए. Your job would be to avoid litigation for your clients at most of the times, and that's how you differentiate between a good M&A lawyer and a great M&A lawyer, right? And then, of course, getting regulatory approvals, CCI se approvals ho gaye if required, right? SEBI se approvals ho gaye, shareholders se approval ho gaye, what are the previous agreements, right? All this takes place, and again, then it happens to be the closing of an M&A deal when everything is finalized. जैसे हम कार में होता है ना, हमने सब कुछ कर लिया, अब डिलीवरी का टाइम है, उसी तरह step 7 is your delivery time, right? So you plan the integrations as well, and the most important thing is there are two things, which is the signing date and a closing date. So signing date is basically when you sign all the agreements, and closing date is basically when you uh, get the actual hold of your company. If you're proceeding with an acquisition, that's the actual hold that you get after that. कूल. चलिए, अब बात कर लेते हैं ड्यू डिलिजेंस की. बट बिफोर दैट, आई अगेन वांट टू आस्क, आई गेस पीपल हियर आर स्मार्ट इनफ दैट they do not have any sort of doubts, but still, in if case if you have any doubts, you can ask here in the chat section and I'll quickly go through it. Fair, we do not have any questions after that as well, so we'll quickly jump to how DD works, or what is due diligence. So due diligence basically is an exercise, or let's say a complete practice, जहां पे आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, जो आपका एम है, मान लीजिए मुझे एक दूसरी कंपनी को एक्वायर करना है, उस कंपनी को लेके सारे लीगल ऑब्लिगेशंस, एनी इश्यूज दैट दे आर फेसिंग, their financial auditing again comes into picture, which generally the lawyers do not do, right? It's done by financial consultants, right? Everything and anything that you would do to make sure that you give a heads up, you give a green tick कि हाँ जी अब सब सही है, बॉस आप आगे बढ़ सकते हो. दैट्स द प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलिजेंस. जैसे जब हम कार खरीदते हैं, राइट, हम सब कुछ चेक करते हैं. दिस इज टर्म ऑफ PDI, राइट, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जहां पे हम सब कुछ चेक करते हैं, डोर सही है कि नहीं, लाइट सब कुछ सही है कि नहीं. सो दैट्स ड्यू डिलिजेंस, राइट. अब ड्यू डिलिजेंस इज नॉट वेरी सिंपल. व्हाई? बिकॉज वो डिफर करेगा हर चीज के लिए या हर इंसान के लिए. सो फॉर दैट मैटर, इफ यू सी, अगर कार का ही एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए हमें कार लेने गए. अब एज अ कस्टमर, the process of due diligence or the checkpoints of due diligence would be different. But मान लीजिए मैं कार बेच रहा हूँ, right? If I'm someone from Hyundai, if I'm someone from Kia, if I'm someone from any company, Mahindra, right? मेरे लिए ड्यू डिलिजेंस अलग होगा. कस्टमर के लिए ड्यू डिलिजेंस मे बी वेरी सिंपल, डोर्स वगैरह चेक कर लिए, सारी चीजें सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, फाइन. फॉर मी एज Hyundai, मेरे लिए देयर में भी 1000 पॉइंट्स. इंजन में नट कौन सा लगा हुआ है, बोल्ट कौन सा लगा हुआ है, टायर में हवा सही है कि नहीं, टायर में कौन सा वॉल लगा हुआ है, द मिरर दैट इट्स देयर, क्या उसको कोई नट ब्रोकन तो नहीं है. सो you understand that the concept of due diligence and the extensiveness of DD actually is different for every party. And इसका मेजर क्या आउटकम होना चाहिए कि कम से कम रिस्क हो on the acquiring businesses, and of course it will also help you evaluate the overall terms in the overall demand that they ask. So अगर कोई कंपनी 100 करोड़ का वैल्यूएशन मांग रही है, and during your due diligence you find out कि यार इन पे एक लीगल ऑब्लिगेशन है which they might lose on, right? So what do? You go to your client and say कि यार boss, I think this is their financial consultants may contact the team and say कि यार आपने 100 करोड़ की वैल्यूएशन लगाई थी, but there's this thing we feel कि
we should come down to 90 cr, right? And that's how you saved 10 cr for your client, correct? So that's how you sometimes get into the determination of what the actual valuation which should be offered by us, correct? And of course, it also helps in key decision making, right? When it comes to any company acquiring the other company, correct? There are set of decisions that has to be taken up. Unka employment kaisa hoga, what are the terms and conditions that they have to follow, guidance किस तरह से होगी, right? And most importantly, क्या हम आगे जाके merger plan करेंगे, ये सब कुछ due diligence के बाद में decide होता है. If you find out that the company has already been going under lawsuits of bad एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट, राइट, तो आपका डिसीजन उस तरह से वेरी करेगा या आपके क्लाइंट का डिसीजन उस तरह से वेरी करेगा. सो ऑल दिस कम्स अंडर ड्यू डिलिजेंस, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी एमएनए लॉयर, नॉट जस्ट एन एमएनए लॉयर. In your career, due diligence would come by here, and it's a very rewarding process, let me tell you that. अच्छा, अब ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस क्या है यार दोस्तों, काफी सिंपल है. सो व्हेनेवर यू स्टार्ट डीडी, एंड डीडी ऑफ कोर्स ना डिफरेंट टाइप के होते हैं, करेक्ट? हाउ एक्सटेंसिव डीडी इज रिक्वायर्ड वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कितनी एक्सटेंसिव रिपोर्ट्स आपसे चाहती है, करेक्ट? सो बेसिकली इट्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वेर यू स्टार्ट विद अ चेकलिस्ट. तो चेकलिस्ट इज वेर यू आस्क योर क्लाइंट कि आप बताओ बॉस, ये मुझे ये चीजें चाहिए, या आप बता दो कि किन किन चीजों पे मुझे काम करना है, रिसर्च करनी है. इट शुडेंट बी कि कंपनी के पास 250 डॉक्यूमेंट्स पड़े, आपको 250 दे दिए, पता चल रहा है उसमें से 20 ही काम के. सो यू आस्क द राइट क्वेश्चंस कि यार अगर आपका ये एम है, मुझे ये चीजें तो चाहिए ही होंगी, तो ये 20 से 25 डॉक्यूमेंट आप मुझे भेज दो, राइट? एंड देन आई वर्क, व्हिच इज आल्सो द डेटा कलेक्शन वाला पार्ट, करेक्ट? चेकलिस्ट बनने के साथ में यू कलेक्ट दैट डेटा फ्रॉम योर रिसोर्स एंड मेक श्योर दैट इट इज करेक्ट, इट इज वायबल बाय बिकॉज आपका ठप्पा लगने वाला है ऑन द डीडी. यू विल बी द वन रिस्पॉन्सिबल if anything goes wrong. So that's why it's a very critical job as well, right? And then you review the data, and this covers a lot of time. Kai bar extensive DDs can go for an year as well, right? 6 months, 3 months, for 2 months. The DD can take a lot of time, but yeah, that's what happens. And जैसा हमने बात की थी, जो स्पेशल स्किल्स, द आई फॉर डिटेल हो गया आपका, करेक्ट? द कमांड ओवर द लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एंड टू make other people comprehend कि क्या issues है, that happens when you identify the issues. जब आप डिटेल में काम करते हो, you find out some findings कि हाँ यार, this is something which I feel has been going wrong in that particular company. Identify this issue and you make a report out of it, and that report goes to your team and you charge them on the billable hours, right? So if you have put in, let's say, about 200 hours in a month, right? Or if 3 of you people have put in 200 hours each in a month, right? And you can bill them up to whatever rate that's happened. Just generally hum dekhte hain, the billing rate may go up to 8,000 rupees an hour, 7,000 rupees an hour, 12,000 rupees an hour as well. So just imagine the sort of money that you can make out of this career, right? जैसा मैंने बात की थी, there are various types of reports. So देखिए, whenever company wants to invest somewhere, right, they also do their DD. It may not be legal DD because DD are of many types. Financial due diligence होता है, right? फिर legal due diligence होता है, ऐसे बहुत सारे के DDs होते हैं, right? So they generally look into the companies before into the law, to the legal DD, and then they decide ki what sort of report do they need. So they may require a full length report. Achha, what's a full length report is basically you go all and research everything and every bit about the other company or the other party and get a detailed report of each and everything. That means पूरे कच्चे चिट्टे खोलने हैं आपको. That's what is a full length report, correct? Now there's a different sort of report which is an issue based report. So the company out there may have done already some of the research and they want you to just go in and find out all the issues, right? They don't need the exact details of each and everything going in that company. What they really need कि चलो भाई हमको इन्वेस्ट तो करना ही है, we are very sure of it. आप ये बताओ कि कहाँ का इश्यूज है, हम उस पर काम करेंगे. अब ये इश्यूज छोटे से छोटे हो सकते हैं, बड़े से बड़े हो सकते हैं. छोटे से छोटे जैसे मान लीजिए कंपनी पे
कंपनी कुछ रेगुलेशंस को वायलेट कर रही है, जिसका हो सकता है फाइन 50 रुपए दिन का हो, 10,000 रुपए दिन का हो, विच आर टू बी रिपोर्टेड। छोटे से छोटा इशू आप रिपोर्ट करोगे, इट्स द कंपनीज कॉल कि उसको उसको काम करना है या नहीं करना है। एंड देन देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ रिपोर्ट विच इज अ रेड फ्लैग रिपोर्ट ओनली। नाउ रेड फ्लैग्स जनरली आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है वर्ड, which generally means that anything or any situation which can go down to be lethal for the acquirer or the investor, which can go down or even stop this particular transaction then and there, which may also go in and shut down the business ideally. Now it can be legal obligations, that can be loans, hidden loans. There was a few examples where we generally found out that the company that we wanted to invest in did already have a company, right, which is not known to us. Another company cases against them, right? There's a whole lot of things going on there. So now this may not be an issue, right, earlier, but now it may be, and now I feel that it's a red flag जिसकी वजह से शायद मैं ये ट्रांजैक्शन ना करूं, right? So yeah, that's how due diligence comes into picture. Acha, now that marks the almost end of this complete webinar. But before we move on, I just want to tell you a bit about the legal school. So if this sparks your interest, right, if you really think that after this 1 hour you really feel कि हाँ यार मुझे M&A में जाना है, I know कि this field would be rewarding for me, this field would be something I want to pursue my career in, you can actually go along, have connections with us, the legal school के साथ जुड़ के you can actually go on and explore some certifications as well, right? आप detailed courses, detailed certifications explore कर सकते हो. And why especially us? Because again, we are not just backed by Indus Law, but Indus Law powers our certification. Indus Law has curated a course for us, especially for law graduates, where they can not just earn a certificate by Indus Law on the certification in M&A, but at the same time uh, gain experiences for their partners. So whenever we generally run a program, it's not just the general academicians, but people from NLU and partners and principal partners from Indus Law. They come in, they teach you more of stuff like this. So yes, you can contact us. You can our academic counselors can help you out learning more about mergers and acquisition. Right. Again, if you see Rashi Bharadwaj, one of the partners in the M&A at Indus Law, along with her principal associate, generally helps us out. And then again, there are placement partners, people from NLSUI, Mr. Nandimad, Mr. Shovik Gua, who generally helps us create these programs, right? Now, if you see the course, if you're really interested into going on and doing a certification, right, it's a 4-month course. You can just drop in your interest and our team would actually help you get into the same, correct? And of course, as I told you, these are completely live course on weekends. So you can actually save your time, right, and study on weekends as well. And you get a certification from Indus Law and you get to learn from their partners directly, right? Now, if you go to the module, so we cover almost each and everything, starting from the foundation of mergers and acquisition to going in head with all the negotiation strategies, the documentations, the overview, the approvals, and of course solving these case studies real time. So thank you so much for being an active listener. Again, you can mark your attendance here as well, right, for this particular session. And Harman, you can help the people with a link to this attendance maybe. Yes. Yeah, basically लिंक शेयर कर दिया विवेक जी ने. एंड स्टूडेंट्स, दोस हु आर डन, प्लीज यहाँ पे डन लिखते रहो. आप जो ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे डन लिखते रहो, जिसने गूगल फॉर्म फिल कर दिया हुआ. Guys, those who have joined from the mobile, they can go to this link in the chat box and kindly fill this form. This is a mandatory form to mark your attendance. Kindly do it as soon as possible. And also, Jalas, can you just show that QR code again? Yeah, I'll just do that. No worries. So I have already shared it, and even Harman has shared it.
Completely fine. The person who have joined from their mobile, so they can click on this link in the chat box and mark their attendance. Fair. Fair. Sounds good. Thank you. Thank you so much, everyone. Make sure you mark your attendance. It's vital for each and every one of you. And of course, once we do that, you get a certification or a joining certificate for this particular webinar that you went into. And that only goes in if you mark your attendance. So do that quickly. Thank you so much for your time, and we'll see you soon.